ठीक है. Now before we start, I want to go back to this and explain to you. Do you remember the problem we did yesterday? ये एक problem किया था हमने, and then we did one more of this, correct? One, and then we did two, correct? Do you remember? I want some response. Yes, ma'am. Do you understand this thoroughly? Yes, ma'am. बराबर समझ में आया? So now let me go to my maximum. एक easy तरीका और बताती हूँ. Go to this expected payoff table. ठीक है? Expected payoff इसका हमने probability के साथ multiply किया है. Remember? So let me Yes, ma'am. for this problem. एक काम करो, मैं ये copy कर लेती हूँ so that we don't get to see too many things on the screen. Okay? ये मैं sheet 3 में copy करती हूँ. Okay? So we are not seeing too many things on the screen. And okay. So ये problem का हमने payoff matrix बनाया. And then we chose out of EMB, EOL के criteria के हिसाब से कल तक हम देख रहे थे. अभी मैं maximum कर लेती हूँ. Let me look into this table. It makes my job easier. ठीक है? कल से एक और easy तरीका है. It makes my job easier when I look into this table of expected payoff. Okay? And when I say supply, this is supply and this is demand, correct? Demand Yes. is your state of nature. Matlab, if there is demand for 0 units, if there is demand for 1 unit, correct? State of nature 1, S1 2, state of nature 2, ठीक है? State of nature 3, S3, okay? State of nature 4, S4, state of nature 5. ठीक है? Are you following? And ये वाला जो है action, courses of action, produce 0 units, produce 1 unit, etc. We call it as course of action. A1, A2, समझ में आ रहा है? A4, A5, ठीक है? Action 1, action 2, action 3, action 4, action 5. How much to produce? In what state of nature? Are you following? Yes, ma'am. Yes. Now let me start with my first one, maximum. Maximum among the minimum. ठीक है? Now A1 में कौन सा maximum है? 0, right? And I will 0. A1, A2. ये सब probability के साथ हमने multiply कर लिया है. So I have no confusion here at all. ठीक है? A1 में 0 था. A2 में maximum, sorry, minimum. A2 में minimum. Minimum क्या है? -1.5. -1.5. A3 में minimum -3. -3. A4 में -4.5. -4.5. A5 में -6. इसमें से मैक्सिमम कौन सा है? As per मैक्सिमम मतलब सबसे छोटा लेना है क्या? छोटा. मैक्सिमम अमंग द मिनिमम, ऐसे पढ़ो. मैक्सिमम अमंग द मिनिमम. ठीक है? आर यू फॉलोइंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे चाहिए तो. ठीक है? मैक्सिमम क्राइटेरिया, द प्रोड्यूसर विल चूज. कौन सा है मैक्सिमम इसमें? सॉरी, A1, ठीक है? टू प्रोड्यूस 0 units. समझ में आ रहा है? Maximum means maximum
from among the minimum. Are you following? Yes, ma'am. Any Yes, doubts? ma'am. Any doubts? No, ma'am. No, ma'am. And ये वाला है minimum from among the maximum. ठीक है? Are you following? Yes, ma'am. Any doubts? So यहाँ पे minimax next. Minimax के हिसाब से I'll again copy this. Okay, यहाँ पे maximum कौन सा है? 0. Zero. Zero. यहाँ पे maximum 25. 25. 25. यहाँ पे maximum 40. 40. यहाँ पे maximum 43. 43. मैम बोलो. मैम ये जो A2 का है उसमें पूरा टोटल करके लास्ट में 45 है ना, तो 25 लेंगे. Sorry, you're right. Sorry, 9. ठीक है? You're right. 9 आएगा ना मैम? हाँ बराबर, ये निकाल दे. ठीक है? ठीक है बेटा. Now 0, 9 ये वाला 18. 18. and then 18. 18. Then 16. 16. तो इसका मिनिमम क्या है? As per मैम A4 में 18 मैम है. A4 में 18 है. आएगा. A4 में 18 तो A5 में और 16. A3 में क्या आएगा? A3 is A3 में भी 18 है मैम. A3 में भी 18 ही है. 306. A5 में 16. 16. As per mini-max criteria, right? As per mini-max criteria, the producer will choose. What will he choose? Action. समझ में आ रहा है? मिनिमम कौन सा है इसमें? यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट किया था, मिनिमम कौन सा है? 0. प्रोड्यूस 0. A1 A1. to produce 0 units. ठीक है? Are you following? Yes. Yes, ma'am. Now I will do Laplace and then go to minimax regret. ठीक है? Yes, ma'am. Total. मैम हाँ ये बेटा. दोनों में एक ही जैसा आपने क्यों लिखा? ऊपर क्या? वाले में भी दिखा एज पर द मैक्सिमम क्राइटेरिया द देखो, प्रोड्यूसर विल हाँ, प्रोड्यूस. इसमें क्या किया हमने? सबसे मिनिमम सब कोर्स ऑफ एक्शन में स्टेट ऑफ नेचर मिनिमम जो आ रहा है ना, वो लिखा था. करेक्ट? हाँ तो उसके हिसाब से मैक्सिमम कौन सा है? बाकी सब नेगेटिव में है, ये सिर्फ सबसे ज्यादा था. इसलिए यस मैम. I got this as answer. वो corresponds to action 1. ओके मैम. Same way समझा minimax. मैम. हाँ वही. ओके, आंसर ऐसा आया, मैंने नहीं लिखा. ओके, ओके मैम. ओके. सो नाउ टोटल ऑल दिस लाप्लेस क्या है कि एवरेज करना है. लाप्लेस में एवरेज इट आउट. मैम अगर फाइंड मैक्सिमिन आया तो हमको खाली इतना ही फाइंड करना है? हाँ बेटा. अगर फाइंड मैक्सिमिन एंड मिनिमम आया तो ऐसा ही फाइंड करना है, खाली इतना ही? हाँ करेक्ट. मैक्सिमम मिनिमैक्स आया तो आपको टेबल बनाने का है, पे ऑफ टेबल. मतलब अभी प्रॉब्लम ये है कि आपको मल्टीपल चॉइस का है. So only you will be asked to say as per maximum criteria, what is the output? What is the course of action chosen by this? Correct? ऐसे पूछेंगे शायद से. ओके मैम, थैंक यू. Okay, no problem. अभी आपको कुछ बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा. Calculation will be minimum because you are doing multiple choice questions, na? Yes ma'am. And how Yes, many ma'am. state of action are there? 5 are there. So I will do average equal to this by 5. समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. Ma'am. You Laplace समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubts? No, ma'am. No ma'am. No, ma'am. So Laplace में क्या होता है? एक मिनट, यहाँ पे 2 छोड़ देती है, साथ में एक साथ ही कर देते.
लाप्लेस क्राइटेरिया क्या बोलता है? लाप्लेस इज मैक्सिमम, एवरेज में मैक्सिमम, एवरेज ऑफ ऑल, I mean of A1, A2, A3, A4, A5, okay, in all states of nature and the maximum of it, maximum of it. तो एवरेज आउटकम क्या है? मतलब एवरेज आउटकम में जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सा है? एज पर दिस 8.6. 8.6. as per Laplace criteria, as per Laplace criteria, the producer will choose to produce, sorry, कौन सा बोला था हमने? A4 A4. और choose A4 और 3 units. ठीक है? Did you understand? Yes. You all understand? Is this easier than yesterday's method? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What we will do is we will take the regret table, क्योंकि मुझे अभी दूसरा वाला करना है. अच्छा, regret वाला ये expected loss table. ठीक है? Now for minimax regret criteria, I need this. ठीक है? Minimax regret criteria. Sorry. Let me special 1 second. 1 second. एक सेकेंड, सॉरी. Is special. एक मिनट. अच्छा, यहीं पे बना देती हूँ ना? Is it okay if I do it here? So, वहीं पे बना देती हूँ. ओके? यहाँ पे क्या होता है? मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया. क्राइटेरिया में, मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया में आई विल चूज मैक्सिमम हर एक कोर्स ऑफ एक्शन में. A1, A2, A3, A4 है ना? मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया में आई विल से सी, इसमें मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम इज मैम 18. 18, राइट? A1, अच्छा ये कॉपी कर देती है, सॉरी बेटा. A1, 18, A2, A2 में क्या है? 12, 12. A3, 6. 6, 6. A4, 5. 5. 5, and A5, 7.5. 7.5. 7.5, right? So what is the minimum? Minimum, 5. the maximum is going to be minimum among the maximum क्या है? 5. 5. Okay. So, as per
minimax regret criteria, the producer will choose to produce. A4. Very good. Produce A4. ठीक है? A4 or 5 क्या units है? A4 is going to be, how many units is A4? 5. 3 units. 3 units. ठीक है? Are you following? Yes, ma'am. Are you following? Yes, ma'am. Any doubt? Yes, ma'am. यहाँ पे लिख देती हूँ refer sheet 2. Okay. Refer sheet 2. Okay. समझ में आया? Can we do one more problem? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. मैंने ये वाला सम किया था आपसे आपके साथ. Are we to do this sum now? Yes, ma'am. कल हमने 2 सम्स किए थे मुझे जितना याद है. Don't note on the board please. Don't note. Erase कर दो आप खुद ही. Now can we do this problem? यहाँ पे ये वाला पहले वाला प्रॉब्लम जो है ना उसके हिसाब से करेंगे. ओके. ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ. ओके. Sum number 2. Okay. ठीक है. Sum number 2 and I'm going to say, अरे यार यहाँ पे एक मिनट. खुशबू प्लीज डोंट डू दैट. खुशबू स्क्रिबल मत करो बच्चा प्लीज. इरेज इट. Yes, ma'am. वो मोबाइल में गलती से हो गया. मैं समझती हूँ. डोंट वरी. पर खाली इरेज कर दो बेटा. ओके. सो नाउ इट्स गोइंग टू बी. ये टेबल बनाने आता है ना आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just wondering how to paste it. You know. मैम आपसे वो तो कर देना मुझे समझ में नहीं आ रहा. Sorry, ma'am. देखिए okay, this is state of nature. Now I'll do expected payoff. Payoff is going to be S1, S2, S3, S4, and then A1, A2, A1, A2, A3, A4. Okay. S1, S2, S3, S4. ठीक है. Total average. ठीक है. Now it's going to be equal to this. क्यों आ रहा है? ओके. एनीवेज ये वाला करते हैं. इक्वल टू ओके. तो मैं पहले लाप्लेस का देखती हूँ. इट इज नथिंग बट एवरेज एंड देन टोटल एंड देन एवरेज ना. So total, how many states of nature? 4. Okay.
So as per Laplace criteria, what course of action will he choose? The producer will choose to producer will choose. What is the answer here? Maximum क्या है? 28.2 नहीं 52 है 52.5 52. A4, ठीक है? A4 समझ में आया? Yes, ma'am. Any doubts? हम लाप्लेस में सबसे मैक्सिमम लेते हैं ना? लाप्लेस में सबसे मैक्सिमम एवरेज, ठीक है? सो मैक्सिमिन करें, मैक्सिमिन, ठीक है? मैक्सिमिन में क्या क्या आता है? मिनिमम ले लो सब चीज का, ओके? मिनिमम A1 का क्या है? A1, A2, A3, A4. Okay, what is the minimum of A1? Minus 37.5. A2 का 0. 0. A3 का Zero. -7. 0. -7. 0. A4 का 0. Correct? 0. So, as per Maximin, the producer will choose which one? A2 और maximum ना इसमें A2 और A4, ठीक है? समझ में आ रहा है? मैं मिनी मैक्स भी करिए। मिनीमैक्स का करती हूँ, समझ में आया ये? मिनीमैक्स Yes, का भी सेम आ रहा है क्या? yes ma'am मिनीमैक्स का भी सेम आ रहा है? What are you trying to say? So I will try to find out my minimum. Minimum क्या है यहाँ पे? Minimum is 7.5. And then A2 में minimum is 0. A3 minimum is 0. नहीं, A3 minimum is minus 7.5. Correct? Here also 0. As per minimax. Minimax. Are you following? You are right. इसमें भी यही आ रहा है. So now let me go to the regret table यहाँ पे, ठीक है? मैं regret table का यहीं पे कर दूं क्या? मैम बोलो बेटा. वो इरेज नहीं हो रहा, मैं इरेज करी पर हो नहीं रहा, आप कर दीजिए ना. No सॉरी. problem. I will do. Don't worry. No. Don't worry. Pay attention. ठीक है? Don't worry. यही सम का. ओके मैम. Don't worry. Yeah. ये वाला loss table है, expected loss table, right? So I made my expected loss table here and minimax regret criteria. Minimax regret criteria के हिसाब से, right? What will I choose? Expected loss मैंने बना के रखा है. Maximum loss I will do A1, A2, A3, A4. ठीक है? So what is the maximum? 0. नहीं, sorry. What is the maximum here? Expected loss 112.5. And then 135. 35. And then 75. 75. And then 60. 6. So what is the minimum? 760. 60 is the minimum, right? So as per max regret, so regret criteria, the producer will choose action A4, right?
A4. समझ में आ रहा है? Are you following? Refer sheet 1. यहाँ पे लिख देती हूँ. Minimax regret criteria. Refer sheet 1. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. Any doubts? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yeah, because I won't be able to ask you to draw. Do you see my screen here? Yes, ma'am. ये वाला मैं आपको बनाने को नहीं बोल सकती हूँ. Ideally it is the same EMB EOL का, but they make you draw a decision tree like this. But आपको multiple choice question है, so I may not be able to make you draw this. ठीक है? मैं आपको बस verbally बताती हूँ. Okay? These are all called as nodes. ठीक है? एक एक course of action है and state of nature, right? ये S1, S2, S3. Okay? And हर एक payoff and probability multiply किया है. That is all. समझ में आ रहा है? 4 course of action A1, A2, A3, A4. Draw like this. This is a starting. Okay? हर एक का notes है. एक एक का state of nature. Right? S1, S2, S3, S4. And हर एक का payoff 15 into whatever probability यहाँ पे दिया रहता है ना 0.4. And then 9 into 0.3. सब टोटल करते हैं. समझ में आ रहा है? जैसे हमने EMV टेबल में बनाया, सेम थिंग इन ट्री फॉर्म. आर यू फॉलोइंग? कैन आई हैव सम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.